कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो in which we will talk about the capital that is there on the bank's balance sheet and the different terms that are mentioned there. Hello everyone, welcome to iExamB. Please don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Today's video is about concept 9. We have been started. Concept पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, under which the most important concepts of economic, banking and financial nature are being discussed on our YouTube channel Target RBI. ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी तरीके के एलिमेंट्री क्वेश्चंस और ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. टुडे वी आर एट ऑन 24th, concept 9 being discussed with me. Understanding bank's balance sheet, the capital are part of it. Yesterday, Sushil sir had discussed capital adequacy ratio with you, in which also he was talking about capital. Today when I am going to talk about capital, I'll talk about the various terms that are used and what they mean, and they will be present in your banking statements also, they will be present in other company statements also. It is very, very important that you keep watching, understanding and testing whether you have understood the concept or not. So for this you can visit the link shown on your screen, where all the videos that we are doing under concept पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, you will be able to watch, download the related PDF and also take a quiz to see whether you have understood or not. These you can see subject wise also, or all the videos together across our 4 YouTube channels. So let's talk about today's topic, the capital. The capital, as I was discussing in my last concept video related to the bank's balance sheet, it is a part of the liability side of the balance sheet. So you can see here how it is on the liability side, and this total in which you are taking together, and this will be equal to the assets total on the other side. Right, so capital and reserves and surplus both form a part of the liability. As Sushil sir was also explaining you yesterday why this is so, because the entity or the bank here in our case and the owners or the shareholders who have given the money are treated as separate entities in accounting and legal terms, right? So let's talk about now this capital and what is the schedule. Schedule is, the one that gives the details of this capital to the various people who want to see. So let's look at the schedule 1. The schedule 1, if you will see, now we have various terminologies: authorized, issued, subscribed, paid up capital, and we also have different amounts that have been mentioned, right? So which amount has been taken over here, and why are the other amounts mentioned and other terms used here? Let's look at it one by one. So let's talk about the first, the authorized capital. The authorized capital basically states the maximum amount of capital that a company can raise, and this has to be specified in their incorporation document, one of which is the Memorandum of Association, commonly known as the MOA. The MOA of the company, so this full form is also important, Memorandum of Association. This is one of the incorporation documents. जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो, एक बैंक को रजिस्टर करते हो अंडर द कंपनीज एक्ट, तो आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए. एंड इसमें आप अपनी कैपिटल मेंशन करते हो जो मैक्सिमम रेस करोगे आप अपनी कंपनी की लाइफ टाइम में. दिस इज नोन एज द ऑथराइज्ड कैपिटल. सो यू कैन लुक एट इट और अंडरस्टैंड इट एज द फुल कैपेसिटी. तो अगर ये ग्लास आपकी कंपनी की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम में अपनी कंपनी की इतनी कैपिटल रेस कर सकती है. तो वो पूरी फुल कैपेसिटी है आपकी जो आप रेस कर सकते हो. इससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते. इससे ज़्यादा आप डालोगे तो it will flow out, right? So this is the maximum capital that a company or a bank can have. Okay, this is also known as the nominal capital or the registered capital. Why nominal है? क्योंकि this is representing the nominal value of the capital
दैट द कंपनी कैन हैव, एंड रजिस्टर्ड भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इससे आप रजिस्टर करते हो, अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हो. सो दीज आर द 2 अदर terms used, right? Now let's look at the other aspect, that I did say that the authorized capital is the maximum a company can raise, but what if एक company या bank ज़्यादा capital की ज़रूरत हो? What will they do in that case? In that case, what they can do is change the glass, increase your capacity. आप इसमें अपनी ऑथराइज कैपिटल तो नहीं बढ़ा सकते, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, यू गेट अ लार्जर नंबर. सो येस, ऑथराइज कैपिटल चेंज की जा सकती है. उसके लिए आपको वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा ऑफ इंक्रीजिंग, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, and change your memorandum of association to reflect the increased capacity. So ये आपने चेंज किया, आपने कन्वर्ट किया स्प्राइट वाटर को दूसरे ग्लास में जो बड़े साइज का है, तो आपके पास और कैपेसिटी बढ़ गई ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए, राइट? सो दैट इज योर possible manner. Now let's move on to the next point of the issued capital. Issued capital is द कैपिटल जो आपने इशू करी है सब्सक्रिप्शन के लिए, जो आपने लोगों को इनवाइट करने के लिए, मनी रेज करने के लिए आपने उनको इशू करी है, आपने उनको दिया है, आपने उनको इनवाइट किया, तो वो आपकी इशूड कैपिटल है कि कितना आपने सब्सक्रिप्शन के लिए डिफरेंट शेयर होल्डर्स, ओनर्स, एंटिटीज, इंडिविजुअल्स को इशू किया है. दैट इज नोन एज द इशूड कैपिटल. सो दिस इज has to be always less than your authorized capital, right? तो authorized capital आपकी full capacity है, issued capital है उसमें से आपने कितना actually different शेयर होल्डर्स को इशू किया, जिसके अगेंस्ट आपने उनकी शेयर होल्डिंग करी है. Then comes the subscribed and the paid up capital. अब आपने तो इशू करा, आप चाहते हैं कि 100 शेयर्स कंपनी के people subscribe to, okay, आपने उनको इशू किया, but only 90 people come and actually are interested in becoming your shareholder and therefore they subscribe to your shares. That becomes your subscribed capital. और जो ये 10 ये बचा है, this becomes unsubscribed. That means आपने 100 रुपीज इशू किए, उसमें से सिर्फ 90 लोगों ने आपको अग्री किया एंड सब्सक्राइब किया, सो वो सब्सक्राइब्ड बन गई, जो बाकी बचा वो अनसब्सक्राइब्ड हो गया. यूजुअली आज की डेट में अनसब्सक्राइब पोर्शन रहता नहीं है, तो सब्सक्राइब पोर्शन ऑलमोस्ट इशूड के इक्वल आ जाता है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये SBI की बैलेंस शीट है. SBI की बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, द इशूड कैपिटल इज मोस्ट, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस 5405 एंड 4612. ओके, सो दैट मीन्स जो बाकी बैलेंस बचा है, ओके, विच इज बचा है 793, वो आपका unsubscribed part है, right? So what do we mean by subscribed again? We mean subscribed means that part of the capital which is for the time being subscribed or taken up by the public investors. Okay, so the difference here 793 has not been taken up and that is the unsubscribed portion, right? Of course उसको अलग से mention नहीं करते, difference in the amount is reflecting that. Paid up share capital या फिर capital that has been paid up for is जिसके अगेंस्ट आपको मनी रिसीव हो गया. सो एक होता है सब्सक्राइब करना एंड उसके अगेंस्ट कंपनी ने पैसा मांगा है, द बैंक हैज आस्क्ड फॉर द मनी, तो द मनी दैट दे हैव रिसीव्ड that becomes your paid up capital. और ये paid up capital आपकी usually same रहती है until unless the company has not called for full. Called का मतलब होता है कि जहाँ पे से कंपनी ने इशू किया है, ये 1 रुपये का शेयर है एंड टोटल कंपनी ने 1 रुपये इसके अगेंस्ट आपसे मांगा है, तो वो पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल बन गया. से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंपनी ने पूरा ₹1 नहीं मांगा होता बट वुड हैव आस्क्ड दैट ओनली गिव 50 पैसा, देन आपका ये 50 पैसा आपका कॉल्ड अप होता and if everybody has paid, that becomes 0.5 becomes your paid up also and the remaining 0.5 becomes uncalled. That means the company has not asked the shareholder to pay this much amount yet.
right? So these are the different terms that can be used. So you will always have to see authorized capital is the maximum. उसके बाद कंपनी इशू करती है, इशू के बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड अगेंस्ट दैट मनी इज रिसीव, दैट इज नोन एज द पेड अप कैपिटल. सो ये इसी अमाउंट और हैकार्की में चलता है. सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी सिमिलर in amount if the 100% money has been called for. So these were the different terms, so you can understand them as, you know, how much amount is where. So this can be called our authorized capital, which is the maximum possible. Out of that there could be some that you have issued. From that issued, how much has been actually subscribed by the investors and the shareholders, and from that subscribed what is paid up. Okay, that is reflecting your different kind of capitals as seen in the balance sheet. The other items are the reserves and surplus. So after your capital you also have your reserves and surplus. So capital is basically the equity shares, the number of shares which are actually issued, and this is shown at the face value. ओके, दैट मीन्स जो भी मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है उससे हम उसको यहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. कंपनी की जो वैल्यू बढ़ रही है, वेल्थ क्रिएट हो रही है थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है. तो ये कैपिटल आपकी रिफ्लेक्ट होती है फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे, एंड द कंपनी व्हाट दे आर अर्निंग दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस and earnings which get accumulated over the years in the form of reserves and surplus. तो reserves and surplus में various type के reserves हो सकते हैं. Some of the common ones are your securities premium reserve. Securities premium reserve है जब आप issue करते हो, आप face value से usually above प्राइस पे करते हो. से द फेस वैल्यू हियर SBI की 1 है, लेकिन जब उन्होंने इशू किया हो मे बी दे इशूड इट एट ₹20 पर शेयर, राइट. जब IPO आता है तो आप देखते हैं कि एक प्राइस होता है जिस पे IPO आता है, राइट. सो जो वो प्राइस है, फेस वैल्यू तो ₹1 थी लेकिन वो ₹20 उसके अगेंस्ट ले रहे हैं. सो दिस ₹19, 20 minus 1, ₹19 becomes the premium that you are paying on the company because the company has a bright future. So ये आपका जो एक्स्ट्रा ₹19 आपको मिल रहा है फेस वैल्यू के ऊपर, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिखा जाता है. Another is a statutory reserve. Banks के केस में banks are mandated to create certain reserves from their profit and loss. This is done so as to keep them safe, that they have certain buffer of capital and that they are not using the entire money in the business processes and to cover different losses. So say for example, RBI for banks, they say at least 20% of your profits should be transferred to the statutory reserves. For NBFC, they do it under the section 45 IC, right. So this kind of statutory reserves could be mandated by different regulators, and also that becomes your statutory reserve. Capital reserve is another reserve that you are creating out of certain kind of capital profits. Okay, so इसे कंपनीज यूज कर सकती हैं बोनस शेयर्स को भी इशू करने के लिए. रीवैल्यूएशन रिजर्व है जब आप रिजर्व क्रिएट करते हो बाय रीवैल्यूइंग योर एसेट्स. रीवैल्यूइंग ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है? से आप कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है, वो जो उन्होंने 50 साल पहले खरीदी थी, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है. सो इट इज़ नॉट राइट टू कीप रिफ्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ दैट land or property which was 50 years ago the cost, because it is not reflecting of the true picture today. So in that case हम revalue कर सकते हैं asset को to see that it reflects the true picture of the company's asset. सो उस केस में जो भी आपको बेनिफिट हुआ है रिवैल्यू करने से, अब वो एक नोशनल प्रॉफिट है, उस नोशनल प्रॉफिट को हम अलग से दिखा सकते हैं एंड उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व बोला जाता है. Then we can have general reserve, which is for any general purposes. It is also a free reserve which can be used for various purposes by the company. And इसके बाद भी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरी ईयर कुछ सरप्लस बचता है तो दे कैन यूज हियर, बिकॉज एवरी ईयर वट एवर द कंपनी इज अर्निंग एज प्रॉफिट दे कैन ईदर पे इट एज डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स और कीप इट इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर, फॉर फाइनेंसिंग द फ्यूचर ग्रोथ.
So this are the typical elements that exist in the reserves and surplus. There can be more depending on the company's need. Now there is another term known as shareholders fund or net worth or shareholder equity that you would have come across. ये सब terms balance sheet में नहीं दिखाई देते हैं आपको, but ये commonly used होते हैं to refer to as the total of your capital and reserves. Your capital and reserves total together are known as your shareholders fund, or they may also be known as the shareholders equity, or it may also be known as net worth, or it can loosely also be known as the owned capital of the company or the bank, right? So these are certain terminologies that are reflected. They may not necessarily be written in the balance sheet, but they are referred to reflect the kind of money that the owners or the shareholders of the company or the bank have put in the company. So that's all for this session. Don't forget to follow the different concept videos on our other channels, iExamBee, AgriBee YouTube and LegalBee, related to their respective concepts. And of course, don't forget to take the quiz and visit the iExamBee concept पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे page for various other videos. If you have missed any or you want to watch again, you can also download the PDF from that website and take the quiz related to a particular concept to check how much you have understood. So don't forget to take the quiz after this video. Thanks everybody. Prepare 50% faster with iExamBee. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon.